मनाली राइट नाउ, नॉट एग्जैक्टली मनाली बट मनाली के पास एक गांव है, वहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ. इट्स कॉल्ड बरोड गांव एंड बहुत सुंदर है, वेरी वेरी ऑफ बीट. देयर इज़ नॉट अ ट्रेस ऑफ अ सिंगल टूरिस्ट है. तो ऐसे बिल्कुल गाँव में रह रही हूँ मैं. ये रहा मेरा कॉटेज जिसमें आई एम स्टेइंग. ऑल्सो आई एम स्टेइंग हेयर फॉर अ मंथ. अभी फ़िलहाल एक्सटेंड भी हो सकता है. एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड इट्स नॉट जस्ट फ्री फॉर मी. अगर आप चाहो तो आपका भी ये पूरा का पूरा महीना फ्री हो सकता है. आई विल टेल यू हाउ. सो कीप वॉचिंग द होल वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉय. शिफ्टेड टू मनाली जस्ट येस्टरडे और आज स्नोफॉल पड़ गई. आई एम सो लकी यू कैन से. इट्स स्नोइंग. मतलब रेन शावर्स हो रहे हैं, स्नोफॉल छोटे छोटे के साथ. इट लुक्स सो 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 प्रिटी. I can't believe it. This मतलब पहली बार हो रहा है 2022 में that I'm watching snowfall दिन में. पिछली बार रात में हुआ था बट अभी दिन में हो रहा है. It's like finally my first legit snowfall in 2022. Yay! थोड़ी देर पहले मैंने देखा था स्नोफॉल पड़नी स्टार्ट हुई थी बट अभी देखो पूरा वाइट हो गया. ऐसा लग रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स का सेटअप है पूरा. एंड आई जस्ट कांट कीप माई एक्साइटमेंट. ऑल्सो मैंने जैकेट बस ऐसे ही डाली हुई है तो ठंड भी हो रही है बट लुक सो प्रिटी. मतलब मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रही हूँ, 4 साल से ऑलमोस्ट मैं फुल टाइम ट्रैवल कर रही हूँ बट फिर भी मेरा मन नहीं भरता इससे. तो अभी स्नोफॉल पड़ रही थी तो आई थॉट कि कुछ खा लेते हैं बिकॉज मुझे भूख भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी. और जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ भैया सोने गए हैं जो बनाते हैं खाना. तो आई थॉट मैं मैगी बना लेती हूँ एटलीस्ट. और अभी इतना स्लिपरी है नीचे, ये देखो पूरा स्नो पड़ पड़ के फिसल गई है. तो मैं बस नीचे जा रही हूँ और मैगी बनाएंगे हम साथ में और स्नो के नज़ारों के साथ में खाएंगे बैठ के. मस्त चिल लाइफ. फ्लेम बहुत तेज है. मैंने ऐसे वाला स्टोव कभी जलाया नहीं है. I had to ask help भैया से. एंड मैं पूरी लाल हो चुकी हूँ. फिर ऐसे मेरे बाल तो लाल नहीं बट मेरा फेस भी लाल हो चुका है बिकॉज बहुत ठंड है. डाल दिया. मैगी तो मिली नहीं यार, ये पिलाना पड़ा. और एक कुछ तो लोकल मैगी मिली है, एक भी मिली है. और ये कुछ लोकल मैगी का है. आई डोंट नो कैसा होगा बट let's try. Also, how do you like my hair? Very weird things to ask. Self-doubt, and to be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around believing my inflated ape brain
figured it out. And suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize. So मैं इतने मतलब जब से व्लॉग स्टार्ट हुआ मैं बस बता रही हूँ कि मैं आई हूँ मनाली एंड एवरीथिंग, बट आई थॉट कि इसके पहले कि मैं अपना रूम गंदा करूँ, आई विल शो यू गाइस अराउंड माय लिटिल क्यूट, वैसे तो रूम है पर इसको मैंने घर बना दिया पूरा. सो स्टार्टिंग विथ दिस इज़ द डोर एंड वी एंटर. सामने रहा वॉशरूम जिसमें 2 टॉवल्स हैं, एक फेस की और एक बॉडी. सो और ये रहा मेरा कुछ स्किन केयर स्टफ, दैट्स मी. एंड ये रहा कबर्ड जिसमें मैंने सब कुछ सजा दिया है, कपड़े, कैमरा, रैंडम थिंग्स. एंड देन इधर आता है रूम, दैट्स द मिरर ऑफ कोर्स. ये कुछ चीज़ें हैं और ये मेरा थोड़ा सा डाइनिंग टेबल है छोटा सा जिसमें मेरी मम्मा के बनाए हुए लड्डू रखे हैं वहाँ पे सीड्स वाले, बिकॉज इंडियन मॉम्स नेवर लीव यू अलोन. दैट्स माई बेड. तो दिस इज़ द पार्ट वेयर आई टेल यू हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रैवल फॉर फ्री काफ़ी लंबे टाइम तक. तो दिस प्रॉपर्टी दैट आई एम स्टेइंग एट, मैं यहाँ पे वॉलंटियर कर रही हूँ. आई एम हेल्पिंग देम विद द सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन बिकॉज दैट्स व्हाट आई कैन डू. एंड मतलब तुम्हारे इफ़ यू आर समवन जो तुम्हें लगता है कि यू कैन यू नो क्लिक पिक्चर्स और हेल्प देम विद मैनेजमेंट नॉर्मल, मतलब ऑनेस्टली वॉलंटियरिंग इज़ फॉर एवरी वन. जिनको लगता है कि यू नो ओनली दीज ट्रैवल क्रिएटर्स कैन ट्रैवल, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ यू नो एनीथिंग, तुम्हें फोटोग्राफी हो गया, यू नो सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, और एनीथिंग लाइक इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट यू कैन पेंट द वॉल्स विद सम ग्राफिटीज या बेसिकली एनीथिंग. ठीक है, यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू अ प्रॉपर्टी दैट यू लाइक एंड आस्क देम इन व्हाट वे, मतलब कुछ भी तुम ऑफर करो उनको कि आई एम गुड एट दिस एंड आई वुड लाइक टू यू नो हेल्प योर प्रॉपर्टी विद इट, बट यू हैव टू मेक श्योर हाउ यू वॉन्ट यू नो, मतलब तुम अपने स्किल से कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो, विच कैन बी एनी थिंग ऑनेस्टली. इट कैन बी एज स्मॉल एज कटिंग वेजिटेबल्स टू एज बिग एज यू नो मेकिंग full-fledged videos, cinematic videos. There are also a few travel brands or travel volunteer companies which can help you, जिसका इंस्टा पे, गूगल पे, हर जगह जाके you can just search for it कि your hostel volunteering opportunities ऐसा करके, and you will definitely get a few options. तो yeah, that is it. Also I know 2-3 companies, but वो मैं disclose यहाँ नहीं करूँगी. For that you will have to subscribe here and follow me on Instagram. Link नीचे दी हुई है. Go follow there. Highlight होगा वहाँ पे एक travel for free करके, and you can find a reel there. And I hope it helps you. And yeah, I think the whole video was helpful in some kind, and you saw how life is in the mountains. अगला video भी आएगा about the reality, you know, of how actually life is in the mountains. थोड़े से secrets, थोड़ी सी कहानियाँ and a lot of fun. So I hope you guys subscribe कर दिया होगा. मैंने कई बार बोल दिया, अभी नहीं किया तो please कर दो. And I'll see you guys next Friday, same time. Okay, bye.